हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। यस्टरडे मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करवाया थे, भेजे थे आई मीन। और टुडे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन 5.1, क्रिएट a graphic organizer in your notebook. The traditional and modern methods of irrigation include the advantages and disadvantages of each. सो इरिगेशन सिस्टम का ट्रेडिशनल इरिगेशन और मॉडर्न इरिगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखने हैं। और traditional irrigation system, there are main traditional irrigation system that are more chain system, Dekli and Rahat. This already we discussed when we were studying in irrigation part of the chapter. और उसके this system requires lot of effort traditionally. वो चीप है बट एफिशिएंट नहीं है। और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में देर आर मॉडर्न मेथड्स सच एज स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मैंने बताया था जो हमारे स्कूल के ग्राउंड में ही है। एंड they are fast and efficient but a little expensive, and once they are set up there does not require any human or animal effort to continue or look after that thing. So 5.2, Girija has a farm in Telangana which is very dry strait. There is a canal close to a farm that supplies her with water for few months of a year. Which irrigation method should Girja use in her farm and why? Girja should use the dripping system of irrigation for her farms because the supply of water is limited, and this system proves to be boon in such condition, and this system water falls drop by drop near the roots of the plant. जो हमने देखा था ड्रिपिंग सिस्टम, उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं हो रहा था, और उस स्प्रिंकलर सिस्टम में देर विल बी सम वेस्टेज ऑफ वाटर, सो लेस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई है, तो उसकी वजह से उसको ड्रिप सिस्टम यूज़ करना चाहिए जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सिर्फ प्लांट्स के रूट में ही गिरे और देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर. So this is practice question number 5. Now let's see practice question number 6. Practice question number 6. First question, why do weeds need to removed? What will happen if they are not removed from the field? If the weeds will not remove, then they complete with crop with space, water and sunlight and nutrition, and that will all will absorbed by the weeds, and the crops which is grown properly will get less amount, so we should remove the weeds from the field. They compete with crops for space, water, sunlight, and nutrition and obstruct the growth of the crop. Second question, which of the statement given below about weed is not true? They obstruct the growth of the plant. Yes, that is true. They interfere with harvesting. No, that is false. They help crop grow well. That is false. They interfere with harvesting. Yes. And they compete with the crops. Yes. So the answer is C. They help crop grow well. That is the false one. Okay, which of the following tools would a farmer use to remove weed from the field? Hoe, X, plow, cultivator. Cultivator is not used, plow is not used, X is hoe. Hoe is used to remove the weeds from the field. Compare and construct manual and chemical methods of removing weeds. So take a difference between manual method and chemical methods of removing weeds. Weeds can be manually uprooted. मैनुअल मेथड में जो मैन्युअली अपरूट करते हैं अथवा वो खुरपी से उसको रिमूव करते हैं, और केमिकल मेथड में वीड्स जो होते हैं उसको केमिकली फील्ड में डाल दे, केमिकल्स जो फील्ड में डाल देते हैं जिसे वीडीसाइड्स कहते हैं। और दूसरा जो सीड ड्रिल मशीन होता है उससे भी रिमूव कर सकते हैं मैनुअल मेथड में, और वीडीसाइड्स इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्प्रेड इन द फील्ड जिससे भी वो वीड्स रिमूव हो जाएंगे। और मैनुअल मेथड में टाइम मोर लगता है, एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, और केमिकल में लेस एफर्ट लेस टाइम, एंड दिस मैनुअल मेथड इज सेफ फॉर द फार्मर्स बट केमिकल मेथड्स आर helpful for the harmful for the farmers.
So these are the practice question number 6, 1, 2, 3 and 4. Now here let's say practice question number 7, and in that practice question number 7.2 and 7.4. First, 7.2, define threshing and winnowing. Threshing is a process of separating the grains from the stack, and usually crops like wheat or paddy are beaten on the surface to separate that from the husk. The ફોતરી છે અલગ પાડવાની આવે એને threshing કહેવાય. And winnowing is a process of chaff from the grains by removing them in the air. A chaff being lighter is blown away, whereas grain get collected at a place. Winnowingમાં જે ફોતરી ઉડાડવાનું પહેલા બે છૂટું પાડે થ્રેશિંગમાં, વિનોવિંગમાં પછી ફોતરીને ઉડાડે અને ગ્રેન જે છાપ હોય એને ઉડાડી દે ને ગ્રેન કલેક્ટ થાય એક જગ્યાએ. So this is threshing and winnowing. Okay, fourth question. In your notebook, create a flowchart for the process of cultivating crop. Make sure to include short description for each of the step. Okay, નોટબુકમાં ચાર્ટ બનાવવાનો છે. 7 basic practice of crop production. First we saw sowing, irrigation and harvesting. Then sowing में preparation of soil, 2 steps before growing crops. Read some steps downside on the basis of this. Irrigation फिर करते हैं जिसमें addition of manure, fertilizer और फिर क्रॉप जो इरिगेशन प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद और हार्वेस्टिंग के पहले ख़त्म होता है, और उसमें रिमूवल ऑफ वीड भी होता है. एंड देन 6 और 7 स्टेप होता है स्टोरेज, क्लीनिंग एंड स्टोरेज. और जो क्रॉप होता है वो ग्रो होने के बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं और फिर स्टोरेज करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, third addition of manure, fourth irrigation, fifth removal of weed, sixth harvesting or seventh storage. So first step before growing crop, preparation of soil is the first step in the process of crop cultivation, and it is known as tilling or plowing, or it helps to turn and loosen the soil. Second, before growing crop, sowing is the सेकेंड स्टेप, और उसमें गुड सीड्स जो सिलेक्ट करते हैं उसको प्लांट करते हैं सॉइल में अंदर, और जिससे वो सीड से पूरी डिफरेंट एक परफेक्ट वे में उसको प्लांट करते हैं जिससे उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन मिल सकता है. फिर ये होने के बाद थर्ड इज एडिशन ऑफ मैन्योर. थर्ड स्टेप, इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. वो मैन्योर ऐड करने के बाद फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाती है, और जो वो ऐसे इंश्योर करता है कि क्रॉप अच्छे से ग्रो होंगे. दिस कैन ऑल्सो बी डन बिफोर सोइंग द सीड्स और आइदर आफ्टर सोइंग द सीड्स. फोर्थ स्टॉप है इरिगेशन, और उसमें वाटर सप्लाई इन रेगुलर इंटरवल में करना होता है, और उसके सोर्सेस वेल, पॉन्ड, रिवर और कैनल कोई भी हो सकता है. फिफ्थ स्टेप है रिमूवल ऑफ वीड, और उसमें वो जब क्रॉप ग्रो हो रहे तब रिमूव करना चाहिए. और व्हेन आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप इन द फील्ड, दैट वी हैव टू रिमूव, एंड they need to remove from time to time so that the growth is not hampered. और उसके दो मेथड्स है, मैनुअल और केमिकल. Chemical is harmful for the farmers as well as manual is very, it's not harmful, but it takes more time and effort, as well as chemical does not take more time and effort. Sixth is harvesting. Harvesting is a cutting of crop once they are grown and mature, and this can be done using a sickle or with a machine called harvester, and this is done after the crop is grown. And seventh is storage. If the crop harvested is not being sold immediately, it is needed to be stored properly from the prevent of the attack of pest, and usually the harvested grain is dried and stored in a jute bags or metal beans. So we now saw practice question number 7, 7.2 and 7.4. Let's see 1, 3 and 5.
What is harvesting? Harvesting is a cutting of crop after they are mature. Cereals crop like rice and wheat take 3 or 4 months to get mature. This is practice question number 17.1. What is harvesting? Harvesting is a cutting of crop, right? You already know. Third question. What are the two ways in which farmers store food grains? If the grains are not sold immediately, they should be stored carefully, and grains can be stored in a jute bags or metal beans. And for large scale storage, silos or granaries are used. अगर सॉप जो क्रॉप होता है वो डायरेक्टली ग्रो होने के बाद सॉल्व नहीं हो जाता है, देन वी शुड स्टोर दैट, क्योंकि उसके ऊपर पेस्ट और वो सब अटैक ना कर ले, अच्छे से रहे, उसके वजह से हमको स्टोर करना पड़ता है। और उसका स्टोरिंग सिस्टम स्मॉल अमाउंट में हो तो जूट बैग्स और मेटल बीन्स, जो इन ગુજરાતી વેસીટ ગુણ ગુણની અંદર ભરે છે કા ટીપડામાં, લાર્જ સ્કેલમાં સ્ટોરેજ હોય તો સિલોઝ ને ગ્રેનરીઝમાં ભરે છે. And last question, despite favorable climate condition, a farmer's crop failed to give a good yield. What could be some possible reason for that? If the farmer's crop have failed to give a good yield despite favorable condition, one possible reason could be the infection of some disease caused by the microorganism. The question here it is saying that कि अगर जो फार्मर है उसने कोई भी क्रॉप ग्रो किया पर वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, और वेदर की वजह से तो कोई कंडीशन में खराबी नहीं आई, वेदर सब अच्छा था जो क्रॉप के लिए चाहिए, तो फिर क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से क्रॉप ग्रो नहीं हुआ अच्छे से? सो वन पॉसिबल रीज़न कैन बी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में होते हैं उसने शायद क्रॉप को डिसइंफेक्ट कर दिया, उसको इन्फेक्ट कर दिया कोई डिसीज से, उसकी वजह से क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं. Okay, so these are the practice question number 7. In today's class we completed practice question number 5, 6 and 7, and here we are at the completion of our chapter, uh, first chapter, which is crop production and management. We completed that chapter of unit 1. Now we will learn about microorganism friend and foe. On in this class we complete here. Next class we will start our new chapter, which is microorganism friend or a foe. So check out the keywords at the end of the chapter: crop, tilling, plowing, manure, fertilizer, irrigation. Write this practice question in your notebook, practice question number 5, 6, 7, and I hope you completed yesterday practice question number 1, 2, 3 and 4. If you have any doubts, feel free to call me anytime. Here we are at the end of the chapter, and I will take a small test within few days. I will tell you before, so learn this chapter and I will tell you that when is the test going to be. All, thank you all and have a nice day.